This questions of November 22 variant 32. Let's start up. Sarah was a sole trader who agreed to sell her business to DB PLC on 31st October 2021. Okay. The summarized statement of financial position immediately prior to the sale of Sarah's business showed the following. Like just before the sale, statement of financial position showed the following. We have been given all these information. Shaji, there's sole trader. Clearly we can see there is a sole trader. Sarah is a sole trader and DB is a company. Why? Sarah has a capital of 123,000. Ordinary shares of DB PLC, ordinary share capital of DB PLC is 400,000. So share capital is $400,000. Par value is how much? $1. Can you tell me number of shares? Incidentally, 400,000 are also number of shares for DB PLC. अपने पास वहाँ लिख लें. Please write that down. Number of shares कितने हैं DB PLC? यहाँ लिख लें 400,000. So that you remember. बाद में आप मसले में ना आए. Then retained earnings, trade payables, short term bank loan. Short term bank loan किसका दिया हुआ है हमें? सारा का दिया हुआ है. The terms of sale of the business were as follows. The purchase consideration was $240,000. This was settled with $30,000 in cash and 150,000 ordinary shares of $1 in DB PLC. Let's check out. Workings की heading दे दें अपने पास. Breakup of purchase price. Breakup of purchase price. Show you. What was the purchase price? 240,000. So yeah. Out of which cash was paid 30,000. Ordinary share capital number of shares कितने हैं? 150,000 multiplied by $1. तो share capital कितना हो जाता? 150,000. Is it equaling to 240,000? 150 and 30? No. There is a missing figure. Now we're gonna take a look. Maybe it says something else ahead. DB PLC took over all assets and liabilities of Sarah's business except for the loan and the bank account. कौन-कौन सी चीजें नहीं take over की हैं? Except for the loan. I'm gonna put a cross on that. And bank account. So everything was taken over in Sarah's business. Non-current assets, inventory, trade receivables, trade payables. ठीक है. कैपिटल तो ज़ाहिर है नहीं टेक ओवर किया होगा. वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मीन्स कैपिटल. देन number 3, non-current assets were taken over at a value of 203,000 and inventory at a value of 14,000. So non-current asset is now 203 and inventory is how much? 14. Answer the following question. Prepare the following ledger accounts in the books of Sarah to record the sale of her business and settlement of the amount due to her. अच्छा जी, books किसकी बनानी है? In the books of, very important point. Now you have to assume yourself you're Sarah. Yes. This is part A. Yeah. Part A says to prepare a summarized version of the draft income statement for the year ended. What question are you? Question 2, everybody. Okay, prepare the following ledger accounts in the books of Sarah. Now you're Sarah, you have to assume that. ठीक है? ये ज़रा O-level standard की बात है, but you need to know this. To record the sale of her business and settlement of her amount due to her. DB PLC account. Let's start up. It's a T account thing.
price. Okay, so nothing was mentioned about breakup of purchase price, so this difference will be known as share premium. कितना आ रहा? Forgot to cover that. Share premium कब आएगा? When the company is distributing shares more than or excess of par value. तो $1 से ऊपर के ही shares issue हुए हैं हमारे. Okay? Now, DBPLC. Let's start up part A, part 1. Okay. How much DBPLC is paying to us? Is that an advantage for us or not? Are they a receivable for us or no? DBPLC debit realization counted or purchase price scale है. ठीक है. So realization account to 40,000. How much cash have they paid against this amount? How much cash have they paid DBPLC? 30,000. ठीक है जी. How much capital do they owe? नहीं, ये find out करना. 240 भाई ये जो भी परचेज प्राइस है, आप इसको परचेज प्राइस भी लिख सकते हैं. ठीक है. बैंक लिख दिया हमने इसके अगेंस्ट. व्हाट इज द डिफरेंस? 210. Now if you observe, we found out the breakup in two forms, 160 and 150 and 60. ये दोनों क्या बनती हैं वैल्यूज? 210. इसका मतलब ये है कि जो भी कैपिटल इश्यू हुआ है, शेयर कैपिटल 150 है और 60,000 क्या है? प्रीमियम. सही है. Then next part is this rubbish was for how many marks? 3 marks. Next part is to prepare bank account. Okay. Opening balance of Sara. Now bank account किसके point of view से बनेगा? You have to assume your Sara. And what was the balance in your bank account available? 12,000 as an asset. Can you see that? Or no? ठीक है. How much have you received from DBPLC? करंट एसेट्स में जाए, सारा की बुक्स में, सारा कॉलम करंट एसेट ये लो. This balance was not taken over by the company, right? They had mentioned us. How much are we receiving? 30,000. How much loan is Sara paying back? Because that was also not taken over by the company. How much loan is she paying back?
20,000. Let's find out the difference. 42 and the difference will be 22,000. Since the business is closing down, this will be Sarah's remaining capital. Carry down to nahi aayega because she's closing her business, right? So she's gonna withdraw this money in the form of capital. Now next part is to prepare capital account. ठीक है ना? Here's an issue. Before preparing capital account, you have to prepare a realization account. Why do we prepare a realization account? Because the business is closing down. The business is closing down and is being sold to someone else. ठीक है? अभी देख लेते हैं ज़रा. कैपिटल अकाउंट किसका बनाना है? पहले तो बताओ मुझे कैपिटल था कितना सारा का? Capital of Sarah. Yes. Capital of Sarah given to me is how much? Can you see that? Where will I post the brought down? Capital is of what nature? Credit nature. Okay. पहले तो रिवर्स पोस्टिंग कर लेते हैं. कहाँ से? इधर देखें. बैंक अकाउंट से रिवर्स पोस्टिंग कर लेते हैं. किधर आएगा? सारा के कैपिटल अकाउंट में किधर आएगा बैंक? डेबिट. और वहाँ से भी कैपिटल किधर आएगा? डेबिट साइड. Against 123,000, Sarah is receiving 22,000. Pay attention. And 210,000. अब जरा देख लें. 123,000 का जो कैपिटल था उसके अगेंस्ट क्या क्या मिल रहा है? 22 and 210. Now, here's the problem. How do we prove it? वैसे तो जो अप्रोच होनी चाहिए थी हमारी वो ये था कि हमें सबसे पहले क्या बनाना चाहिए था? Realization account. How to prepare a realization account? First thing, write off all Sarah's assets given to me in the balance sheet, except bank. Except bank. तो 164 सारे assets बनते हैं. ठीक है. -12 करेंगे क्या आता? Can you tell me? 164 minus 12 क्या आता? Assets x बैंक कितना? 152. उसके बाद all liabilities except loan. तो दो liabilities थी 21 and 20. लोन टू पार्टनर और लोन फ्रॉम पार्टनर वही. किसी क्या सारा ने खुद को कोई लोन वगैरह दिया? आई मीन डिड शी बोरो समथिंग फ्रॉम द बिजनेस और हैज शी गिवन सम लोन टू द बिजनेस? नो. दिस वाज अ शॉर्ट टर्म बैंक लोन. तो 21 and 20 गिव्स यू व्हाट? बैंक ओवरड्राफ्ट and loan from owner, since it's a sole trader, or to owner.
ऐसे ही लिखो अपने पास जैसा मैं लिखवा रहा हूँ। कितना है 40 कितना था कश्यप 41,000 बोथ लाइबिलिटीज आई एम राइटिंग ऑफ टुगेदर क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो हम सारे अब तो इनकम स्टेटमेंट नहीं बनेगी ना। द बिजनेस इज सीजिंग टू ट्रेड बिजनेस अब बंद हो रहा है जब बिजनेस बंद हो रहा होता है तो वो अब इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाएगा they're not going to prepare income statement they're going to write off all the assets and write off all the liabilities एंट्री क्या बनेगी इन दोनों की रियलाइजेशन डेबिट इनकम स्टेटमेंट की जगह क्या डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन और लिक्विडेशन रियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन द बिजनेस ठीक है liabilities debit realization credit the cover appropriation account current account video you have to do that अच्छा जी उसके बाद परचेज प्राइस कितने की थी परचेज प्राइस कितने की थी $240,000 ठीक है और इसने एसेट्स कितने बेट दिए हैं एसेट्स इसने कोई टेक ओवर किए हैं कितने पे एंड 14 तो ये मार्केट वैल्यू हुआ सो कैन यू टेल मी प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन व्हिच इज द हायर साइड क्रेडिट साइड इज हायर कितना है 281 is there anything else that we're supposed to post guys yeah there is a change short term loan write off नहीं होगा because Sara is paying it तो कितना है शॉर्ट टर्म लोन के अलावा दो लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास 21 and 20 सो 21,000 ही राइट ऑफ होगी बताएं आप ज़रा कितना आ रहा है फरीद कैलकुलेट कर लें ज़रा वन पहले ये दोनों ऐड करें क्या आ रहा है 260 1 and how much gain is coming 109,000 ठीक है गेन सारा के लिए हो रहा है तो सारा का कैपिटल आ जाएगा नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट हाउ आप ज़रा इन दोनों को ऐड करें 22 and 210 क्या बनता है विच इज़ द हायर साइड एक्चुअली 232 कि नहीं गेन ऑन रियलाइजेशन मैंने बॉक्स बना दिया है सो दैट यू रिमेंबर वैसे तो हम ये फाइंड कर चुके हैं फिगर ठीक है ना 232 minus 123 बताएं क्या आ रहा है 109 इज इट रिकंसाइलिंग बैकवर्ड्स जाके भी आप निकाल सकते थे ठीक है ना liabilities except bank overdraft and loan from owner और loan from owner ही होगा एक्चुअली loan to तो नहीं होगा इसको erase कर दें लोन फ्रॉम पार्टनर और लोन फ्रॉम ओनर भी लिख सकते हैं सोल ट्रेडर है इसलिए ठीक है नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डन फरीद प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डीबी पीएलसी इमीडिएटली आफ्टर द परचेज ऑफ सारा's बिजनेस लेट्स स्टार्ट अप बिफोर स्टार्टिंग अप the balance sheet you have to calculate purchased goodwill formula is purchase price
minus revised value of net assets. ठीक है, परचेज प्राइस कितनी है? Now revised value of net assets. How much has he taken over non-current assets? 203,000. और क्या क्या टेक ओवर किए हैं? नॉन करंट एसेट्स टेक ओवर किए हैं 203 पे. इन्वेंट्री कितने पे टेक ओवर की है? तो प्लस 14,000. Why am I doing this? नेट एसेट्स का मतलब क्या है? ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटीज. ठीक है. सो 14,000 एंड देन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 15,000. बैंक तो टेक ओवर नहीं किया ना इसने. देन ट्रेड पेएबल्स माइनस 21,000. जो जो टेक ओवर किया वही आएगा. बताएं ज़रा नेट एसेट्स क्या आ रहे हैं? ये ब्रैकेट बता दें. हम 210, 11 और 10. फरीद कैलकुलेट करें जल्दी. टोटल आएगा 45,000. और रविश आर यू टॉकिंग? 240 minus 203 plus 40 plus 15 plus minus 21, right? या 211. 211 पूछ रही हैं, बता रही हैं. बहुत आ रही है. 240 minus 211 gives you 45. 29. 45. 529. 45 क्या बोले जा रहे हो? ये बताएं. परचेज गुडविल. Note this down, then we'll move forward. Okay, this is a very easy part. Even if you mess up in the first 3 parts, which you shouldn't, but चलो अगर कर देता है बच्चा कोई बात नहीं. Okay, let's start off. Now, statement of financial position of DV PLC. This is part B. Okay, non-current assets सबसे पहले आएगा. Pay attention फरीद. Non-current asset में सबसे पहले क्या आएगा? Goodwill. How much did we purchase goodwill? 29,000. ठीक है. Then non-current assets भी तो टेक ओवर किए हैं उसने. How do we get that value? 203 plus 722 क्या बनता है? 925. 203 बताओ टोटल क्या हो रहा है? 925. 954. करंट एसेट्स इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास? 14,000 प्लस 101. कंपनी की भी तो इन्वेंट्री है. 115. ट्रेड रिसीवेबल्स 15,000 प्लस क्या आ रहा है? 91. फरीद कैलकुलेट भी करें साथ. कैश एट बैंक
वेरी इंपॉर्टेंट। 12 तो टेक ओवर नहीं किया आपने, ठीक है। कितना कितना कैश एट बैंक था कंपनी का? 24। इसको कितना पे किया आपने? तो देयर इज अ प्रॉब्लम। 24 में से क्या माइनस हो गया? तो क्या बन गया हमारा ये? नेगेटिव 6000। एनी प्रॉब्लम? ये ओवरड्राफ्ट बन गया, तो ये हमारा करंट एसेट नहीं रहा। बता दें टोटल करंट एसेट्स क्या हो रहे हैं? 115 प्लस 91। Current assets 206, total assets 1160. 1160 000। ठीक है जी। अब हेडिंग आ जाएगी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स की, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी। अच्छा जी, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं कंपनी के पास? पहले कितने थे? 400 कि नहीं? 400,000 शेयर्स थे, और मजीद कितने इशू किए हमने? 150। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? ठीक है जी। शेयर प्रीमियम, डिड वी जनरेट एनी शेयर प्रीमियम? हाउ मच? 60,000। एनी रीवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह तो नहीं है ना? रिटेन अर्निंग्स कितनी है? रिटेन अर्निंग्स 464। 464. तो शेयर होल्डर्स फंड्स क्या आ रहा है? 107. करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स कितने थे? 21, और इसके कितने? 59। दैट गिव्स अस क्या आ रहा है? 80,000। and there was another current liability which was bank overdraft, which was 6,000। 6,000 आ गया। क्या आ रहा है? 86। Is it balancing? Equity and liabilities. One zero, 110, 1160 000. Okay. All right. Part C and Part D, 7 marks. A year later, the market price of one ordinary share in DB PLC has risen to 1.8. ठीक है, अंडरलाइन दिस। कितने पे हो गया मार्केट प्राइस? 1.8। बट द डिविडेंड
yield had fallen to 3%. Sarah was able to earn interest of 4% on funds she invested elsewhere. Advised Sarah whether or not she should sell her shares in DBPLC and invest the proceeds to earn interest. Justify your answer. ओके जी, पहले तो हम निकालते हैं कि करंट जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है. ठीक है, पार्ट सी. ऑलराइट, so how many shares did Sarah have in the company? How many shares did she have in the company? कितने shares थे? 150,000. ठीक है जी. ऑलराइट, पहले तो हम निकालेंगे इसका डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला. What was the formula dividend yield? Dividend paid divided by market price per share, which is 1.8. डिविडेंड यील्ड कितना बोल रही है? 3/100 is equals to dividend डब्बा. Make a box on this because I have to find this out. क्या आ रहा है? 0.05. Dividend is 0.05 per share. per share multiply by number of shares कितने हैं? 150,000. That is 8100. 8,000. 100. That's the dividend we're receiving. ठीक है, ये per share आ रहा था. Remember this. Let's start up. $8100 is the dividend Sarah is receiving. Point number 1. 8100 dividend is received on shares in comparison to. हाँ जी, वो कह रहा है आज ये पैसे बैंक में या कहीं और रखवा दिए होते तो उस पर इंटरेस्ट कितना आ रहा होता? 4%. कितने पैसे हैं हमारे पास? कैपिटल कितना है सारा का? कितना है कैपिटल? कितना रिसीव किया सारा ने? 240. Okay, 8100 dividend is received on shares in comparison to 10,800 interest. इंटरेस्ट कैसे आया? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 150. मार्केट वैल्यू इज 1.8. तो कितना शेयर कैपिटल मार्केट वैल्यू पे बन रहा है? 270. उस पे अगर वो विड्रॉ कर जाए आज ये, तो उस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10,000. पहला पॉइंट तो ये हो गया. ठीक है जी. दूसरा पॉइंट, यानी कि डिविडेंड कम मिल रहा है और इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है. सही है. नेक्स्ट पॉइंट विल बी if Sarah wants short-term income, then it is suitable to sell shares. अच्छा जी. Finding buyers for Sarah's
shareholding might be difficult. Next point. The company might retain high proportion of shareholding. अभी तक DBPLC के शेयर ज़्यादा हैं या सारा के शेयर ज़्यादा हैं? DBPLC. Therefore, डिविडेंड बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, फ़ायदा किसका हो रहा है? DBPLC का ही हो रहा है ना, क्योंकि शेयर होल्डिंग जिसकी ज़्यादा होगी उसी को डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा. Dividends might not increase एंड में एडवाइस लिख दें. कंसिडरिंग all options above, Sarah should sell her shares and invest for 4% return. Part D. Explain how stewardship affects a business purchased by a limited company. पहले तो we need to know what stewardship is. Stewardship की definition लिख लें पहले अपने पास ज़रा. Stewardship is the responsibility given to directors to allocate resources and manage resources on behalf of shareholders. On behalf of shareholders. ये तो होगी definition, which was not asked obviously. मैं आपको डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को. एक्सप्लेन हाउ स्टूवर्डशिप अफेक्ट्स अ बिजनेस परचेज बाय लिमिटेड कंपनी. लिखें स्टूवर्डशिप adds confidence, and directors must ensure that purchase of business is in the best interest of shareholders. ठीक है जी, you're done with this question? Okay.